From the territory of Jammu and Kashmir, where we learned that 2 women have been arrested for providing aid to terrorists. Now we learned that in a significant crackdown, 2 women, Arsha Begum and Maria Begum, have been arrested under the Public Safety Act in Udhampur's Basantgarh area, Jammu and Kashmir, for allegedly providing logistical support to terrorists. Officials revealed that the arrest followed heightened terrorist activity in the region, including the neutralization of 2 Pakistani terrorists in counter operation on September 11th. Several locals involved in aiding terrorists have been identified and they have been slapped with sections of UAPA and PSA imposed on multiple individuals. So that's the breaking news that's coming in from Jammu and Kashmir, where we learned that 2 females have been arrested for providing logistical support to terrorists. They are named as Arsha Begum and Mariam Begum. They have been arrested under the stringent Public Safety Act in Udhampur's Basantgarh. Visuals of the 2 women on your screen. We learned that they were allegedly providing logistical support to terrorists. We also have a reaction from SSP Udhampur. Let's listen in to what he had to say. इलाके में जो दहशतगर्दाना मूवमेंट पिछले कुछ दिनों से देखी जा रही थी, उस पर काबू पाने के लिए जो है उधमपुर पुलिस ने कई कदम उठाए हैं। इसी के चलते जो है आपने देखा होगा 11 सितंबर को एक काउंटर टेरर ऑपरेशन में 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट को मार गिराया गया था। अब तक जो है हमने कुछ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है, लोकल लोगों को, जो दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उनको मदद भी मुहैया कराते हैं। ऐसे लोगों की फहरिस्त को जो है हमने एनालाइज किया और दौरान तफ्तीश जो है अब तक 2 लोगों को जो है यूएपीए के मुकदमों में जो है गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ 3 लोगों पे जो है स्ट्रिंजेंट पीएसए प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हुए उनको डिटेन भी किया गया है। इसी कड़ी में आज 2 महिलाएं अर्शो बेगम और मरियम बेगम को भी जो है पीएसए में जेरबंद किया गया। हमारी तफ्तीश में ये पता चला था कि ये दोनों महिलाएं जो हैं ये इंटेंशनली और विलफुली जो है दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे और इसी वजह से इन पर यह कार्रवाई की गई है। देखिए, टेररिज्म जो है वो एक हमारा इम्पोर्टेंट चैलेंज है, लेकिन जिनकी पुलिस और बाकी सिक्योरिटी जो फोर्सेस है उनकी भी पूरी तैयारी है इस चैलेंज को मीट करने के लिए। हमने देखा है हाल ही के ट्रेंड में कि कुछ फीमेल टेरर एसोसिएट्स को भी जो है टेरर ग्रुप्स अपनी नापाक इरादों में जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कानून सबके लिए एक है, वो मर्द हो या औरत हो, उसका कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति इस किसी भी तरीके की गैरकानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अभी तक 3 लोगों पे जो है पीएसए की कार्रवाई की गई है, जो कि टेररिस्ट को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के जुर्म में मुलव्वस थे और 2 लोगों के खिलाफ जो है यूएपीए के मुकदमा किया गया है। Gursimran, my colleague, joins me live from Jammu. Gursimran, a big crackdown there by the security officials. 2 women have been arrested. As we heard the SSP Udhampur saying that they were providing intentional logistical support to the 2 terrorists. They have been arrested. Now, what more details do you have on the case? See, this is part of a mega crackdown that is underway for last almost a week's time. The security forces are conducting a major crackdown on the terror associates that have helped the Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed cadre in Jammu and Kashmir. And as part of this crackdown going on in the Udhampur's Basantgarh, 2 women have been arrested and booked under the Public Safety Act. They are identified as Arshad Begum and also Mariam Begum. They are from the Basantgarh's area and they have been actively providing support, logistic support to the terrorists of Jaish-e-Mohammed who have infiltrated from across the border. But the major challenge continues for the security forces to hunt these terrorists that are still active in the area, because there have been so far 13 arrests of the overground workers in the ongoing crackdown that is on for last 9 days, almost 9 days it's been, because it started last Monday. And now as we speak, there are some of the more overground workers that have been detained by the Jammu and Kashmir police, and it is very likely that they will be placed under arrest. And this is being done so as to ensure that that ecosystem, the oxygen network that is there for the terror groups to survive in Jammu and Kashmir, the locals that help these terror groups, be it for any of the radicalization that the terror groups have done or for the sake of money, that all is being probed by the Jammu and Kashmir police. But yes, the terrorists are still at large, and that is really a serious concern.